अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई होप घर पे भी सब खैरियत से हैं। आई एम पोस्टिंग अ कम्युनिटी अपडेट आफ्टर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स टुडे एंड मेजर रीज़न यही थी कि देयर वाज़न्ट एनीथिंग सिग्निफिकेंट दैट हैड टू बी ब्रॉट टू योर नोटिस थ्रू अ कम्युनिटी अपडेट। जितनी हमारी रेगुलर अनाउंसमेंट्स थी वो स्कूलोजी के थ्रू जा रही थी एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर यूजिंग स्कूलोजी टू स्टे अपडेटेड अबाउट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग एट द स्कूल एंड ऑल्सो टू रजिस्टर योर कंसर्न्स। आप हेल्प डेस्क ही यूज़ करें बिकॉज दैट्स द प्लेटफॉर्म जिसको मैं खुद भी मॉनिटर कर रही होती हूँ, मैम समरीन भी कर रही हैं, सब कोऑर्डिनेटर्स भी कर रहे हैं, सो इट कीप्स एवरीवन इन द लूप। ड्यूरिंग दिस टाइम हमारा जो एम्फोसिस रहा है दैट हैज़ बिन ऑन मेकिंग एडोपिया अ सेफ स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन। आई नो कि दिस इज़ अ टॉल गोल एंड इट्स अ बिग आस्क, इट्स नॉट समथिंग जिसको आप कहते हैं कि वी वांट टू डू दिस एंड यू नेक्स्ट डे यू हैव अ सेफ स्कूल। इट्स अ प्रोसेस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मोर सो इन अ स्कूल लाइक आर्स जहाँ पे द चिल्ड्रन डू गेट टू हैव अ लॉट मोर फ्री टाइम देन इन अदर schools, so the chances of getting into a conflict are also a lot more than there are in other schools. लेकिन इसी तरह बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, जो रफ एंड टम्बल ऑफ द प्लेग्राउंड होता है, जो प्लेग्राउंड ड्रामा होता है, जब बच्चे इससे डील करते हैं तो उनकी रेजिलियंस बिल्ड होती है एंड एज एडल्ट्स हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वी डू लेट देम हैंडल ऑल ऑफ इट एज मच एज पॉसिबल एंड जहाँ पे थिंग्स डू गेट आउट ऑफ देयर हैंड्स वहाँ पे हम स्टेप इन करें और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करें और उन्हें सेफ फील करने में हेल्प करें। इस साल हमने अपनी जो डिसिप्लिनरी पॉलिसी है उसको रिवाइज किया था और आपके साथ शेयर भी किया था एंड उसकी जो की चेंज था वो ये था कि वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि वो कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको बच्चों को लाजमी रिपोर्ट करना चाहिए और वो कौन से ऐसे इंस्टेंसेज हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जिनको बच्चों को आपस में खुद से रिजॉल्व करना चाहिए। वी ट्राई टू बिल्ड देयर कैपेसिटी टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन देयर ओन। हमने टीचर्स के साथ काफ़ी वर्क किया टू हेल्प चिल्ड्रन रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट्स इन देयर प्रेजेंस एज फैसिलिटेटर्स एंड हमने जो इंफ्रैक्शंस है, डिसिप्लिनरी इंफ्रैक्शंस व्हिच आर प्राइमरीली एप्लीकेबल फॉर मिडिल ईयर्स एंड अबव, उनको भी रिव्यू किया था एंड वी आल्सो अपडेटेड दोज। Alongside that we had a few community mixers and some workshops. I think both of the ideas worked well. Community mixers में हमें काफ़ी participation मिली which we were very happy about and बड़े low stake events थे हमारे end से भी, so we didn't have to prepare for them as such और हमारी टीम की भी effort उस तरह नहीं लग रही थी in the preparation जैसे previously लग जाती थी। So everyone has had a good time and I hope that we'd be having more of them in the coming term as well. We'll share the schedule. Workshops का थोड़ा ये था कि there were around 4 of them that were organized and उनमें से 2 मैं खुद लीड करी थी, 2 टीम ने लीड की थी। बट एक चैलेंज जो रहा है वो ये है कि एवरीवन वुड ऑलवेज अटेंड विद देयर कैमरास ऑफ एंड माइक्स म्यूटेड। तो बहुत बार ऐसा लगता था कि एक वन वे लेक्चर है जो विच वी आर काइंड ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन विद यू, बट इट वाज नॉट अ वेरी इंटरैक्टिव सेशन। सो आई फेल्ट कि ये सही तरीका नहीं है फॉर अस टू रियली बिल्ड discourse around the ideas that we are working with at the school. So अब के लिए थोड़ा सा workshops का different pattern ये होगा कि we have launched a new project called the Common Room, which is basically a space that we have in I8 and उसको हम outsource भी कर मतलब we are making it available for other people to use that space as well for collaborations and other things and साथ साथ वहाँ पे हम parent support groups and workshops भी conduct करेंगे for European parents and also for parents who want to learn about alternate education but are not a part of our सिस्टम। तो वो स्पेस विल बी ओपन टू ऑल एंड वहाँ पे हमारी अब पेरेंटिंग रिलेटेड वर्कशॉप्स जितनी भी हैं वो कंडक्ट हम कराएंगे। सो इफ़ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू ग्रो एज अ पेरेंट, विच आई हाईली रिकमेंड दैट यू डू think about this as well कि हमारी अपनी education as adults has to go alongside the education of our children for us to be the best possible facilitators for our children. तो उसके लिए आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उन वर्कशॉप्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट करें एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कोर्स। एंड एज सम ऑफ यू माइट हैव नोन कि मैंने पिछले सेमेस्टर में एक कोर्स फॉर पेरेंट्स भी रन किया था एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दैट आई वाज वर्किंग विद दे वर नॉट फ्रॉम एडोपिया। कुछ बहुत रिमोट एरिया से भी थे, कोहाट से, हैदराबाद से, डिफरेंट कंट्रीज से थे इन द पार्टिसिपेंट्स इन माई कोर्स and I used to be in awe of how dedicated they were in terms of wanting to learn more for themselves, ताकि वो बेहतर facilitators बन सके अपने बच्चों के लिए। So I would at times joke with them कि there are at times families that I meet and parents that I meet were so much more Edopian in their mindset that at times हमारे अपने parents उतने invest नहीं कर रहे होते
into these endeavors as much as parents from outside our ecosystem are doing so. So मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वी आर ऑल लर्नर्स. मैं सीख रही हूँ, मेरी टीम सीख रही है, हम सब ने सीखना है अगर हमने अपने बच्चों को सपोर्ट देनी है. सो डू ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दीज डिस्कशंस एज मच एज पॉसिबल, एंड इससे हमारे बच्चों को ही फ़ायदा होगा इन दी एंड. सो विल शेयर द स्केड्यूल ऑफ ऑल द वर्कशॉप्स एंड मिक्सर्स जो फैमिलीज़ की हैं. बाकी क्वालिटी के लिहाज से यही है कि आई एम ऑल्सो कीपिंग अ टैब. जो जहाँ जहाँ डिफरेंट एरियाज़ हैं जो हमारे इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी होती हैं उन पर मैं ख़ुद भी नज़र रख रही होती हैं. द कोऑर्डिनेटर्स ऑल्सो डू इट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस, एंड कहीं पे भी कोई कंसर्न रेज होता है दैट इज़ ब्रॉट टू अस थ्रू द हेल्प डेस्क, एंड फिर हम पूरी कोशिश करते हैं दैट वी वर्क ऑन दोज कंसर्न एरियाज़. एंड हमने एक फीडबैक फॉर्म भी रन किया था, सर्वे रन किया था मिड टर्म कि अगर किसी फैमिली को कोई भी इशू आ रहा है regarding the program, regarding the support that their children are getting from the faculty members or the coordinators or the school overall, तो आप हमें बताएं, हम उन चीज़ों को और बेहतर बनाएंगे. So we did get some responses, and in responses को हमने नोट किया है, कैटेगराइज किया है. We'll be working towards some of them जो कि applicable हैं, implementable हैं during this term, and इंशाल्लाह मिड टर्म में हम उन फैमिलीज़ के साथ टच बेस करके पूछेंगे if that experience has been improved for them or not. So stay in touch with us. Let's continue to make our relationship something that's wholesome and something that's not purely transactional. We understand we are a school, we are a service provider, so there are going to be aspects to our relationship that are transactional, and we can't ignore, or we can't pretend कि ऐसा नहीं है. But at the same time, we are also people who are working with children, and so उसमें first and foremost यही है कि हमारी dedication towards your children matters a lot, and your relationship with us matters a lot. So let's continue building our relationship together, and let's work together to support our children. बाकी आपने कभी भी, if you want to speak to me, or if you want to have any meeting with any teacher and any coordinator, please do reach out to us through the help desk. That is the main portal that we have, that we use to support you and your needs. ये है कि कुछ अर्से के लिए I will be away from the school because I will inshallah be going for my maternity leave. But उसमें ये है कि one thing that's harder for me to do during that time is to schedule meetings once the baby is here. Pre-set times पे work करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है because it really I have to balance the needs of the baby and their nursing needs alongside the work that I am doing. But if someone really wants to have a meeting or wants to talk to me, तो आप बताइएगा, शाइस्ता को बता दें, नताशा को बता दें, and then inshallah I'll try to give you a call back if my services are needed in any way. Baki alhamdulillah, the team is great. That's the kind of feedback that I've been getting from parents, so I'm going to believe it because बहुत सारे parents मुझे कहते हैं कि the team is doing a good job. जितने भी coordinators हैं, they are very understanding and very supportive. Ma'am Samreen है, who is one of our oldest member of the team, who's right now leading the project. She has been here for the past decade and she knows the system pretty much as I do. हम लोगों ने मिल के ये बनाया है. So she is spearheading this movement right now, and we have a team of people who have been with us for a while, who are right now working in the capacities of being coordinators at the school. So alhamdulillah, I know the school seems to be in good hands, but कोई भी चीज़ हो जिसमें आपको हमारी support की ज़रूरत हो, so do reach out, and I hope all of you have a very wholesome term ahead. जितनी मेरे अंदर हिम्मत हुई, ताकत हुई, I will try to send another community update in a couple of months. But in the meanwhile, make the most out of everything that we have to offer at the school, and let's continue to grow together. Thank you so much. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.